बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर निगत मीर अहमद हूँ। आई एम बोर्ड सर्टिफाइड इन इंटरनल मेडिसिन एंड ऑल्सो इन रूमेटोलॉजी. I am chair and founder trustee of Arthritis Care Foundation. I also am on the faculty of UHS and faculty of Fatma Jinnah Medical University, and I am chair rheumatology at Gulab Devi Hospital and Alimuddin Medical College and at Defence National Hospital, Lahore. मेरे प्यारे डॉक्टर हजरात जो इस वक्त सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि एक दूसरे तक पहुंच नहीं सकते और मरीज हम तक नहीं पहुंच सकते और डॉक्टर जो हैं वो मरीजों तक नहीं पहुंच पा रहे। तो होपफुली ये जो सीरीज हमने शुरू की है आर्थराइटिस के ऊपर और ऑटोइम्यून डिजीजेस के ऊपर, दिस वुड हेल्प अस प्रोटेक्ट आवर पेशेंट्स एंड ऑल्सो थोड़ा सा मैंने जिक्र इस पे डॉक्टर्स के लिए भी करना है क्योंकि डॉक्टर ने भी तो अपने आप को बचाना है और काम भी करना है, और डॉक्टर ठीक रहेंगे तो मरीज भी ठीक रहेंगे। तो लेट्स गो टू स्लाइड 1। सो मेरा ख्याल है कि कोई भी चीज़ समझने से पहले, क्योंकि डॉक्टर्स डिफरेंट जगहों से अगर आए हुए हैं और सुन रहे हैं, तो आपको we have to remember कि why is this COVID-19 so different from other diseases? इसका मुश्किल ये है, it is very treacherous disease because it's a respiratory borne illness that is easily spreading from one person to another person, and it has a very high degree of morbidity and mortality associated with it. सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह ये है कि it can spread even when you have no symptoms. So patients जिनको कोई symptoms भी नहीं है या उनको कोई problem नहीं लग रहा, they can also spread it. हम सबको फ्लू हो चुका है लेकिन उसकी स्प्रेड और है थोड़ी सी, और वो 0.1% उसके साथ मोर्टेलिटी है, बट इसके साथ मोर्टेलिटी इज वेरी हाई इन नॉर्मल पीपल, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनके लिए तो मोर्टेलिटी इज स्पेशली वेरी हाई एंड स्पेशली डेंजरस फॉर पॉपुलेशन जो कि ऑटोइम्यून डिजीजेस, फॉर एग्जांपल ऑटोइम्यून डिजीजेस भी डिफरेंट टाइप्स की हैं, लेकिन सरफेरेस्ट इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लूपस है, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सोराइटिक आर्थराइटिस है, मायोसाइटिस है, और बहुत सी रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस हैं जिनमें ये पेशेंट्स चाहे वो यंग हैं या ओल्ड हैं, वो एट हाई रिस्क हैं। हार्ट diseases के patient, lungs के patient, you all know lung diseases, and diabetic patients and elderly people. अगर वो इन सब चीजों से they are not suffering from that, but still if they are elderly they are at risk, and in them it can be very serious and very high degree of mortality. Now how can we, अब ये भी तो पता है ना कि how can we catch this disease? When what happens when someone is unwell? उनको फौरन अपने आप को दूसरों से आइसोलेट कर लेना है या आपने मैसेज देना है अपने मरीजों को। मैं काफी हैरान होती हूँ, मैं पिछले दिनों से पेशेंट से ऑलमोस्ट टेली कंसल्ट कर रहे हैं, तो उनको ये बताना मुश्किल होता है कि आपने अपने आप को अलग करना है दूसरों से, जिसको आजकल सेफ डिस्टेंस कह रहे हैं। तो क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स से स्प्रेड होती है एंड स्प्रेड्स बाय एरोसोल। अब होता ये है कि व्हेन समबडी इज स्नीजिंग एंड कॉफिंग, तो जो ड्रॉप है वो फौरन नीचे नहीं चला जाता, वो कैन हैंग इन द एयर फॉर सम टाइम। दिस मींस अ पर्सन हु इज एंटरिंग द रूम कैन इनहेल दिस लेटर ऑन, और जो स्नीज कर रहा है और जो कॉफ कर रहा है तो वो इस तरह से स्प्रेड कर रहा है। और दूसरा आप सबको पता है कि हैंड शेकिंग या ओपनिंग द डोर, सिंस वायरस जो है इट कैन लिव ऑन ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टील है, प्लास्टिक है, डोर नॉब्स हैं, और उन पे वो सेवरल आवर्स तक रह सकता है। तो ये आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए और आपको पेशेंट्स को एजुकेट करना है जो आपसे एडवाइस जा रहे हैं। मैं बताना चाह रही थी कि अगर स्लाइड को गौर से देख रहे हैं, लुकिंग एट इट, तो यू कैन सी कि कॉफ और स्नीज करने से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो
2 मीटर यानी कि 6 फीट तक जा सकते हैं. सो इसीलिए जो सेफ डिस्टेंसिंग है वो 6 फुट है फ्रॉम द अदर पर्सन. एंड सो बेसिकली अगर जो स्मॉलर पार्टिकल्स इसके हैं वो तो बड़ी इजीली लंग में जा सकते हैं और वो सिर्फ N95 फिल्टर मास्क ही उनसे बचा सकता है. लेकिन जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो सर्जिकल मास्क से भी उनसे प्रोटेक्शन हो सकती है. तो आपने ये अगर डायग्राम देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि अपने पेशेंट्स को भी बताइए और खुद भी आपको पता करना है कि कोई भी अगर कॉफ और स्नीज कर रहा है उस कमरे में करके चला गया तो वो ड्रॉपलेट्स उधर मौजूद रहेंगे. तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वन ऑफ जो ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स स्पेशली कमिंग इनटू दिस रूम विल कैच दिस इन्फेक्शन. So, अब सबका ये ख्याल है कि जी ये तो elderly, this is a disease of the elderly, but that's not true because young people are not absolutely invulnerable. People in their 30s, in their 40s, with or without. Please note this, that with or without underlying conditions which we have just listed are getting this disease. So, young patients, आपको पता है कि autoimmune diseases are present at any age. Even children have it. Young adults have it. So basically, these young patients, like having RA and lupus and other conditions which I mentioned, who are taking immunosuppressed medications, are also vulnerable. So, कई दफा ये भी हो सकता है कि young person is not sick, but can be infected and may not have any symptoms or may have just a few symptoms, but then that person आपके घर में वो आपको infect कर सकता है ये लोग जो इन conditions से suffer कर रहे हैं, and he can make them sick. For example, children infecting their grandparents या children या siblings जो है infecting patients who have autoimmune diseases. So please make sure that it's very important to understand that how your patient can get sick and how you can get sick. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि is there any drug for prevention as of today या treatment के लिए कोई drugs के बारे में क्या है? What is the latest? As we speak today, there is no proven, safe and efficient effective direct therapy for COVID-19. बहुत से clinical trials are going on which are randomized, double-blind trials to see what works and what does not work, and what is safe and what is not safe. But up till now, yes, there are small trials, but to say if something is proven is very difficult to say. This makes it very difficult for doctors कि वो क्या advice दें अपने patients को. एक जो चीज सबको पता है, which is going on all over, is that hydroxychloroquine, people have started taking that. So let me tell you the facts about this medicine. This medicine is approved obviously for autoimmune diseases. You know, patients with lupus are taking it, patients with rheumatoid arthritis are taking it, patients, we have used them in all ages. And this appears to be generally safe, but it has certain toxicities, especially in certain populations. For example, patients who have heart diseases, patients, if you're doctors, you know, prolonged QT interval, or people who have renal insufficiency, who cannot clear it, some people who have macular degeneration, if they continue to take it. So it has certain toxicities. So we do not want to use that indiscriminately for prevention as it's being done. We do not want to take this drug off the market for people who really need it for the diseases which they have. Autoimmune diseases के लिए approved है, और आप सोचें we are having an extreme shortage in the world, and in Pakistan hopefully we will not have that shortage as is showed by the companies which are making it, that they are very essential for patients with autoimmune diseases. And taking them from prevention has not been in any guidelines, but of course it is being used, and it is in the guidelines for treatment
of patients who are suffering from COVID-19 and have been diagnosed as COVID-19 patients. So what is the message for patients who have arthritis? Arthritis, I'm talking about autoimmune arthritis, जिनकी मैंने लिस्ट थोड़ी सी बताई है. देखिए जी, सबसे important बात, please, you have to make sure that you are following all the precautions for COVID-19. TV पे आ रहा है, phone call पे आ रहा है, but you do it very seriously. I was doing a call with one of the patients, और वो इतनी क्यूट थी, उनकी granddaughter बार बार उनके पास आके बैठ रही थी. So I had to tell her, you have to keep your distance, because बच्चे can easily infect people who are their elderly grandparents or people who have autoimmune diseases. So keep safe at a safe distance, and stay away from people who have any kind of infection. But remember that if you're doing fine and if you have no issues, please continue to take your arthritis medications. मुझसे पेशेंट पूछते हैं, तो सब हम मेथोट्रेक्सेट लेते रहे हैं, उनके रिलेटिव्स पूछते हैं, डॉक्टर्स पूछ रहे हैं कि मेरी अम्मी फलाने मेडिसिन पे हैं, मेरी बहन जो है वो ले रही हैं, लेफ्लुनामाइड ले रही हैं, फॉर्मेज सेल्सेप्ट ले रही हैं, क्या करें? कोई इन्फेक्शन है, कोई चांस, कोई एक्सपोजर, कुछ नहीं है. तो इफ दे आर स्टेबल, दे शुड नॉट स्टॉप देयर मेडिकेशंस, क्योंकि अगर उनकी बंद हो गई वो मेडिसिन और उनकी डिजीज फ्लेयर अप हो गई, तो आप सोचेंगे फिर हम कैसे ट्रीट करेंगे. क्योंकि एक तो सबसे एक और बात जो चल रही है कि वो आप पेनाडोल अपने पेशेंट्स को दें प्लीज पेन के लिए. पेनाडोल इज कंसिडर्ड टू बी सेफ इन दिस सिचुएशन. मोस्ट ऑफ द NSAIDs, सारे NSAIDs जो हैं are not a recommendation. So please tell your patients, अगर दर्द हो रही है तो प्लीज पेनाडोल खाएं, और लोकल चीजें यूज करें, जेल लगाएं, रेस्ट कर लें, कमर में दर्द है बेल्ट लगा लें. इस तरह की सब बातें हैं जो हम उनको एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि they can't go to the doctors just because they are hurting. आपको ये पता ही है कि हम नहीं चाहते कि वो unnecessary क्लिनिक्स पे जाएं या unnecessary हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में एक्सरे कराते फिर रहे हैं. आजकल तो आई थिंक मैं हर एक को एक एडवाइस दूंगी कि आई थिंक एवरी पर्सन इज कैरिंग दैट वायरस. ऑल ऑफ अस आर कैरिंग इट, एंड वी हैव टू प्रिवेंट infecting others, and we have to prevent infecting the doctors and infecting the general public. So इस वजह से प्लीज अपनी इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि आपने अपनी दवाइयां, अगर आप ठीक हैं तो बंद नहीं करनी. यू कैन टेक पेनाडोल फॉर पेन, डोजेज उसकी वही हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, अनलेस दे हैव लिवर डिजीज या किडनी डिजीज. लेकिन एक और बात, अभी हमारा एक पेशेंट था, वो एडमिट हुआ और उसके जो है स्टीरॉइड्स ऑफ 5 मिलीग्राम्स ऑफ डेल्टाकोटल ले रहा था, तो उसकी फौरन बंद कर. नो, यू कैन नॉट स्टॉप देयर डोज ऑफ डेल्टाकोटल व्हिच दे आर टेकिंग फॉर सर्टेन रीजंस, बिकॉज आपको ये याद रखना है कि आपने वो पुराना लेसन याद रखना है कि इफ इवन पेशेंट्स who are taking it, they have infection, you have to slightly increase their dose because their adrenals may not respond to the stress. So don't stop it. दूसरा ये है कि if you have arthritis and you contact any infection, कोरोना की तो बात ही छोड़ दें, कोई भी इन्फेक्शन अगर आप ले रहे हैं तो आपने कुछ मेडिसिन हैं जो बिल्कुल आपने अपने पेशेंट की मेक श्योर करनी है कि वो आप स्टॉप कर देंगे. पेशेंट्स अगर कोई है इसमें ऑडियंस में, दे शुड नो, या डॉक्टर्स के उन पेशेंट्स ने ये दवाइयां नहीं लेनी. फॉर एग्जांपल मेथोट्रेक्सेट बंद कर देनी है अपने पेशेंट की, लेफ्लुनामाइड बंद कर देनी है, इम्यूरान बंद कर देनी है, सेल्सेप्ट बंद कर देनी है. सो बेसिकली DMRs आपने बंद कर देने एक्सेप्ट फॉर HCQ. यू विल ऑल्सो स्टॉप. अब पेशेंट उकाड़ा में बैठा है, रूमेटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, परेशान हो गए, इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उनके बायोलॉजिक्स बंद कर देने. फॉर एग्जांपल एटेनासेप्ट है, ह्यूमेरा है, कोसिंटेक्स है, कोई भी इंजेक्टेबल बायोलॉजिक या ओरल DMR एक्सेप्ट फॉर HCQ और प्रेडनिसोन प्लीज हैज टू बी स्टॉप्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द इन्फेक्शन. और खुदा ना खास्ता अगर कोरोना का तशखीस हो गई है आपके इस पेशेंट में, तो फिर तो आपको you have to call the government and go that way, because उनकी अपनी हॉटलाइन है. अगर कोई परेशानी हो रही है और कुछ समझ नहीं आ रही तो अपने हेल्थ प्रोवाइडर को कॉल कर सकते हैं ये पेशेंट्स.
आपको कॉल कर सकते हैं और आपको हम मजीद इसके बारे में एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम आपको एडवाइस करेंगे कि आपने इन पेशेंट्स को कैसे डील करना है। क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल जो पेशेंट है जो दूसरी सिटीज में है या इधर है, तो हम उनसे कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो और हम आप नहीं हम तक पहुंच सकते या टेलीफोन पे नहीं आप किसी तरह हमें पा रहे, तो आप अपने जरूर लोकल फिजिशियन को फोन कर दीजिएगा। तो या कोई इमीडिएट सर्जरी इमरजेंसी अगर आपको हो गई है, तो वो कहते हैं जी, वो कहते हैं हमने तो हाथ ही नहीं लगाना बिकॉज हमें नहीं पता कि इन दवाइयों का क्या करना है। तो होपफुली बाय दीज talks you would be able to tell them that this is what you need to do, but आप stuck हो जाएं इसी वजह से, तो हमारी एक हेल्पलाइन का नंबर है जो सुबह 9 AM to 11 AM मंडे थ्रू फ्राइडे। इस पे कोई अगर आपको एडवाइस चाहिए हो, एब्सोल्यूट एडवाइस, क्योंकि हम लाइंस को बिजी भी बहुत नहीं करना चाहते, मैसेज भी छोड़ सकते हैं इस लाइन पे अपना, so that later on we can reply it also. So we are there for your help and we want you to take the lead because physicians, doctors जो patients के उनका एक special bond है, और खासकर इस situation में you don't want to break that bond because I think it is your test that you are taking care of your patients one way or the other and not staying home and not being able to help them. Yes, doctors have to stay safe. We want doctors to be protected, but we can't leave our patients without help also. ये डॉक्टर नवीद ने एक ब्रोशर जो PKLI का, I think you can download also, which I think is very useful for the patients, which you can share. अगर आपको चाहिए होगा तो भिजवा दूंगी, बट इसका बड़ा अच्छा तरीका है जो उर्दू में जो अपने पेशेंट्स को समझा सकते हैं, प्रिंट करके रख सकते हैं, उनको व्हाट्सएप पे दिखा सकते हैं कि ये आपकी किन रास्तों से आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो सकता है। एक रास्ता तो ये है कि कोई ऐसी सतह आपने छू ली है, किसी ने वायरस कोई आपके घर आ गया है और वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है और पेशेंट जो है उसको छू लेता है उस सतह को जिसपे उसकी छींक चली गई है, तो आप के अंदर तो वो फौरन ही चला जाएगा। सो इसीलिए आपने अपने वही कह रहे हैं कि साबुन से और जरासीम से जो है वो फौरन जो है वो करें, वॉश करें, तो वायरस तो आपके जिस्म में दाखिल हो जाएगा अगर आप ये चीजें करेंगे। और अगर आप कोई मुतासरा मरीज है और उससे 1 मीटर के कम फासले पर हो जाए और ना उस मरीज ने मुंह पे मास्क पहना हुआ है और ना अपनी खांसी और छींक के वक्त उसने मुंह ढांपा है और आपने भी मुंह पे मास्क नहीं पहना हुआ, तो ये वायरस जाहिर है कि सांस लेने से अंदर दाखिल हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से दाखिल हो सकता है। So ये मेरा ख्याल है, I really find these slides very useful. Please you can download them. और आपको ये पता है कि ये वायरस किसी जानदार सतह पर किसी भी जगह पर अगर मौजूद होगा तो ये बड़ी इजीली ये वायरस आप तक पहुंच सकता है। तो आप इन चीजों से मेक श्योर करें, ये तो सब जगह पे मिल रही हैं ये एहतियातें, बट आई फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी फॉर यू टू टेल द पेशेंट्स एंड गेट इंफॉर्मेशन कि किस तरह से आप इस वायरस को निजाम जो आपका चेस्ट इज, हाउ कैन यू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग इन, और इसको याद भी रखना है। So while people can stay at home, they can protect themselves. You must make sure that आप ये पूरी जो हिदायत हैं कि घर पे रहते हुए, हम होपफुली वेरी सून विल स्टार्ट है होम केयर प्रोग्राम के, अगर आपको ऐसा है तो आपने अपने आप को कैसे आइसोलेट करना है, अलग हो जाइए फौरन सबसे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अगर एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है और उसको कुछ ही थिंग्स के शक हुआ है उसको कि कोई छींक वाला बंदा या कोई हो गया है, और अब जाहिर है टेस्ट भी तो नहीं करा सकते, टेस्ट मिल भी नहीं रहे, people are afraid of getting test unfortunately, तो आप तो प्लीज फौरन ही अपने आप को आइसोलेट कर लेना, बस एक कमरे में महदूद कर लें अपने को एंड सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। उसकी भी गाइडलाइंस हैं, वो भी हम शेयर करेंगे बाद में। तो सो पेशेंट्स के लिए ये है कि अपने घर के में क़याम को तरजीह दें, बाहर जाने से ग्रेज करें, घर वापसी से पहले बहुत एहतियात करनी है आपने, घर में दाखिले पर आपने भी करनी है, उन्होंने भी करनी है,
और बहुत ही शदीद जरूरत हो तो पेशेंट अपने घर से बाहर निकले, बिकॉज देखिए अगर आपको जरा सी कहीं दर्द हो रही है तो एक्सरे कराने ना चले जाएं, डायरिया हो गया तो अगर इतना खराब तबीयत नहीं है तो उठ के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से मेरा बहुत ये अपनी ख्वाहिश है कि प्लीज डॉक्टर्स अपने आप को यू शुड बी देयर फॉर योर पेशेंट, दे शुड बी एबल टू कॉल यू एंड से दैट हमें डायरिया हो रहा है। इफ यू डू व्हाट्सएप कॉल विद देम यू कैन सी देम आल्सो कि हाउ डू दे लुक लाइक, if they are up and about and they can do oralites and all that stuff, then they don't have to go to the hospital. So make sure that these people are not going out of their home. And basically, प्लीज अगर खांसी या छींकें आ रही हैं और किसी महत्वपूर्ण मकाम पे है तो प्लीज फेस मास्क आप जरूर लगा सकते हैं। और यू मेक श्योर दैट यू नो don't send people too much outside, go to shops and buy these, and because they will bring infection from outside. And you all know, you know all that, I don't have to tell you, but tell patients, because honestly patients in remote areas don't know this, they don't have to go shopping for grocery shopping har waqt, and they have to keep a safe distance from other. आपको ये बताऊं कि मुझे बहुत जरूरी जाना पड़ गया एक स्टोर पे, तो अब मैंने सोचा कि इसमें मुझे मास्क लगा के जाने की स्टोर क्या जरूरत है, बट देन आई सेड कि नहीं मैं रख लेती हूँ। And then as soon as I walked into the store, because I had like 3 people coughing and sneezing, and I immediately put on my mask. जैसे मैंने आपको बताया था कि the droplets stay in the air for a while, and if you are not 6 meters away from them, 6 feet away from them, so this airborne thing you can inhale. So मैंने सोचा कि मैं तो अच्छा किया कि मैं मास्क ले आई थी, because ये तो अच्छे पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, and I in fact told one of them that देखिए आप इस खांसी और ये बच्चा जो टीनेजर था वो कॉफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, तो इसको मास्क पहनना चाहिए था या फिर इसको आपको नहीं लाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा नहीं जी इसको कुछ नहीं है। सो आई वाज लाइक यू डोंट नो, बिकॉज पीपल आर एसिम्प्टोमेटिक, दे हैव नो सिम्टम्स, मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स, मोस्ट ऑफ द पीपल में बी जस्ट एसिम्प्टोमेटिक। और जब मैंने उनसे इंसिस्ट किया कि देखिए जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसको इस खांसी और स्नीजिंग के साथ आप मत लेके फिरें। सो आपको ये बहुत स्ट्रेस करना है, यू शुड बी देयर फॉर योर पेशेंट्स। प्लीज जो है यू हैव टू मेक श्योर कि अगर कमरे में भी बैठे हैं ना तो अपने घर में आजकल डाइनिंग टेबल की चेयर्स जो है हमने कोशिश कर रहे हैं कि 6 मीटर यानी हम उसको 6 फुट दूर करें, बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर पेशेंट्स। एंड एज आई सेड ये बड़ी सब बातें आपको पता है कि आप कि मुलाजिम है, प्लीज मुलाजिमों को भी अपने घर का बंदा वी हैव टू कंसिडर, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि दे आर नॉट कमिंग टू योर प्लेस इन अ बस और in a swarry where the 3 or 4 people. देखिए मेरी बात सुने, you have to remember that prevention is the best fight we can put up against it. मैं आपको एक चीज बताऊं, जो लोग हॉस्पिटल चले जाएंगे, जिनको वेंटिलेटर चाहिए होगा, उनमें से बहुत से लोग जो हैं they will not come back home. So I was watching a video and it was saying that we have to say goodbye to people who have to go to the hospital, because हमारे hospitals जो हैं अपनी बेस्ट भी कर लें, तो डॉक्टर्स अपनी बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी मुश्किल बीमारी है कि लोग डेवलप्ड कंट्रीज में गिर पड़ रहे हैं इसके ऊपर, डॉक्टर्स बीमार हो रहे हैं लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं, वो एकदम में उनकी नी जर्क रिस्पॉन्स हो रही है कि इसको फौरन हेल्प कर लो। तो आई थिंक कि अगर आपने अपने आप को नहीं बचाया एंड अपने पेशेंट्स को नहीं बचाया तो यू विल फेल मिजरेबली। हमारा तो देखें मजहब ये कहता है कि एक को बचाए तो सारी कायनात को बचा लिया। तो एज डॉक्टर्स आई थिंक वी हैव टू बी अवेलेबल फॉर आवर पेशेंट्स, ऑनलाइन हो जाए, टेली हो जाए, व्हाट्सएप हो जाए, बहुत सिक है तो प्लीज प्रिकॉशंस लेके जाएं, और प्रिकॉशंस अगर करें तो आपको होपफुली इंशाल्लाह ताला यू शुड बी ओके। वो तो एक और नई सीरीज है जो ये आपको मैं बता सकती हूँ कि ये चीजें आपके कुछ एरियाज में लोगों को ये बातें नहीं पता। सो जब मैं कंसल्ट करती हूँ पेशेंट्स के साथ, आई स्टार्ट विद दिस के
प्लीज कैसे आपने वो कोरोना को अपने को कैसे बचाना है पेशेंट्स को। तो सॉरी आई थिंक ये सो अगर ये आई हैव दी स्लाइड्स और मैंने आपको बताया ये आपको मिल जाएंगी कि ये किस तरह से आप डिफरेंट बिजली के स्विच हैं, बिजली के आलात हैं, उसके जरासीम कैसे आपने उनके साथ क्या करना है, मेज के ऊपर की सतह को कैसे करना है, दरवाजों के हैंडलों को कैसे करना है, पानी के नल की टूटियों को कैसे करना है। तो इसमें आप ये हर जगह मौजूद है, आप खुद भी प्लीज डाउनलोड करिए और प्लीज उसको पढ़िए और अपने जो है पेशेंट्स को बताएं, क्योंकि अपने कमरों में अपने चीजों को कम कर दें, ऐसी चीजें रखें जो इजीली वाइप करके साफ कर सकते हैं। प्लीज कालीन फोल्ड कर दें, उनको एक तरफ कर दें। As I said, you are fighting this virus by preventing it. Please, we have to prevent it. We can't infect other people. So साफ सुथरे घर में रहें, घर के लोगों को बाहर मत जाने दें। और ये बड़ी वीडियोस चल रही हैं कि पहले जमाने में जो बुजुर्ग थे वो बच्चों को कह रहे थे कि भाई क्यों जा रहे हो घर से बाहर और क्यों देर से आ रहे हो। अब उलट हो गया कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को कह रहे हैं कि खुदा के लिए बाहर मत जाए, अफसोस पे क्यों जा रहे हैं, जनाजे पे क्यों जा रहे हैं, किसी का निकाह हो रहा है तो क्यों जा रहे हैं। तो सो लोगों से दूर रहें ताकि वायरस आपसे दूर रहे। मुतासरा जो आप मरीज की जब आप निगहदाश्त कर रहे हैं तो प्लीज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और हम एक होम सीरीज भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज एंड में हमें ये पता चलना है कि पेशेंट्स अल्लाह माफ करे जब ज्यादा हो जाएंगे तो लोग हॉस्पिटल इतने बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि वो हमें ले सकें। सो वी शुड नो कि हमने अपने घर में अपने प्यारों का कैसे ख्याल रखना है। तो ये आप डॉक्टर्स के लिए बहुत शॉर्टेज है पीपीई की, हजमत सूट्स की, प्रोटेक्टिव गियर की, मास्क की। वी ऑल नो कि कितनी शॉर्टेज है। लेकिन आपको पता है कि बाहर से जो हमारे कोलीग्स हैं वो हमें ऐसी चीजें भेज रहे हैं कि हमें थोड़ा सा हौसला होता है कि वो भी तो कर रहे हैं। सो ये इन्होंने जो वहाँ पे बाहर ये जो भेजा है एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने ये वो बना लिया प्रोटेक्टिव स्क्रीन, स्क्रब पहना है, ऊपर उसके गाउन पहन लिया और मास्क उन्होंने सील कर दिया अपने फेस, जहां जहां से उन्हें ख्याल है कि ये अंदर मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और आंखों के जरिए अंदर जा सकती है। I think this is a very good innovation in situations which are not ideal. और हमारी तो बिल्कुल आइडियल नहीं है बिल्कुल सिचुएशन। हमारी गवर्नमेंट भी कितना कर सकती है जब तक लोग खुद चीजें नहीं दरियाफ्त करेंगे। जैसे ये एक उन्होंने दरियाफ्त कर लिया और ऐसे काम कर रहे हैं। और प्लीज एक चीज मैं यहाँ पे कहती चलूँ, ये ग्राफ जरा आप लोगों को जरा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको बताऊं कि किसी का पीसीआर अगर नेगेटिव आ जाता है एक दफा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो he does not have COVID-19 infection. Why? Because the virus, which is the PCR, is sensitivity is only 40%. इसका मतलब है कि आप 50 to 60% of the patients of COVID-19 will be missed by single test. So actually, ideally, this test has to be repeated. बाहर की countries में तो लोग 24 hours के बाद फिर करा रहे हैं और फिर 5 days के बाद करा रहे हैं. So you are highly suspicious of a patient, especially देखिए autoimmune patient है, खांसी कर रहा है, उसको interstitial lung disease भी हो सकती है, उसको फ्लू ही आम हो सकता है, पता नहीं चल रहा कि क्या करें इसको कोविड है या नहीं है। तो आप पीसीआर करते हैं और वो नेगेटिव आ जाता है, तो आपको पता है कि आप 60% चांस है कि ये टेस्ट जो है वो नेगेटिव, आप हाईली सस्पिशियस हैं तो आप उसको एकदम में क्लियर गो हेड सिग्नल ना दें, बिकॉज अगर आपका सस्पिशन हाई है तो प्लीज फिर मेक श्योर करें कि उसका टेस्ट दोबारा रिपीट करें 5 days के बाद. So this is for your protection, for the patient's protection, for the hospital where you have to work. उधर भी spread तो नहीं करना ना. So stay safe. And inshallah we'll fight this together. We'll continue this series. So ये तो बहुत लंबी series है. This was just an introduction. And I thank Gets Pharma. इनका ये इतना अच्छा initiative है कि you can access so many people at one time and educate so many people at one time. I am extremely grateful to them for this initiative, and this will help us
save patients' lives, doctors' lives. And I have no words to thank you. I am extremely indebted to my Arthritis Care Foundation team, which is working day and night, my colleagues at different hospitals who are working day and night. I hope and pray कि आप सब और आपकी फैमिलीज और हमारा मुल्क और सारी कायनात जो है, जो अल्लाह ने हम पे आज़माइश डाली है, हम सब मिलके अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हम सबका ख्याल रख सकें और सब इस मुश्किल और आज़माइशी घड़ी में हमें अल्लाह ताला ने चाहते हैं. आमीन एंड शुक्रिया. The answer to this question is very interesting क्योंकि अभी डॉक्टर फाउची जो रोजाना who has worked on Ebola, who has worked on HIV, and he's top authority in USA on all this. According to him, we have no randomized controlled trials. But जो anecdotal reports are available, HCQ is used for treatment. So ये तो बाद में पता चलेगा कि जो HCQ ले रहे थे वो सेफ थे या नहीं, बिकॉज अभी ये ट्रायल्स चल रहे हैं. इसीलिए हम ये कह रहे हैं अपने पेशेंट्स को, बहुत से पेशेंट्स से मैंने बात की है कि डॉक्टर साहब हम HCQ क्या करें, तो मैंने उन्हें कहा बिल्कुल बंद ना करें. सो ये तो अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा. एंड दिस विल ओपन बहुत से doors of research for us so that when during outbreaks we have a lot of our own data. Unfortunately टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव है एंड आई थिंक कि हर कंट्री ट्राई कर रही है कि वो अपने टेस्ट डेवलप करे ताकि वो इतने एक्सपेंसिव ना हो. आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि हमारी भी जो है इंस्टीट्यूट्स वो इसको डेवलप कर सकें. अभी तो बहुत ही एक्सपेंसिव है. सो बहुत जल्दी बाहर की कंट्रीज में ये टेस्ट भी नहीं अवेलेबल हो रहा. आपने वो पढ़ा होगा कि प्रिंस चार्ल्स पे तनकीद हो रही थी कि उन्होंने क्यों जब किया और वो क्यों उनका टेस्ट पहले हो गया जबकि इतनी लाइन लोगों की लगी हुई टेस्ट कराने के लिए. दिस इज अबाउट यूके. सो पाकिस्तान तो आपको पता है कि हमारे रिसोर्सेज कितने कम है, तो टेस्ट तो बहुत एक्सपेंसिव है. बट मैं ये बताती चलूं कि देयर इज अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग योर रिस्क, योर पेशेंट्स रिस्क. आई थिंक अगर आप उस पर भी चले जाएं तो अगर क्यू में खड़े हैं टेस्ट कराने के लिए तो hopefully that will help you guide also. Test तो बहुत expensive है, you're very right. If you are doing fine, अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो please the instructions are that we should continue our medications as we are doing. The reason being कि अगर आपका flare up हो गया तो ना आप दर्द की दवाइयाँ ले सकते हैं, ना आपको हम कभी कभी स्टीरॉइड्स दे देते हैं जो बहुत आपका फ्लेयर अप होता है, वो भी हम यूज नहीं कर सकते. सो वी वांट यू टू कंटिन्यू योर मेडिकेशंस बट प्लीज 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 पेशेंट्स मस्ट स्टे अवे फ्रॉम, दे आर द सेम. मैं तो उनको ये कहना शुरू कर दिया कि आप ऐसे समझें कि आपके इर्द गिर्द सबको कोरोना है. सो आपने अपने घर में सब प्रिकॉशंस लेनी है जो आप एक कोरोना के पेशेंट को सोचते हैं कि ये मेरे पास है. तो इसलिए प्लीज वो आप वही दवाइयाँ कंटिन्यू करेंगे जो आप ले रहे हैं. अगर आप मेथोट्रेक्सेट 20 मिलीग्राम पेशेंट ले रहा है तो आप उसकी 10 तो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे. बस उसको प्रिकॉशंस लेनी, क्योंकि उसकी डिजीज अगर फ्लेयर अप होगी तो देन हाउ आर वी गोइंग टू ट्रीट इट, बिकॉज हमें नहीं पता ये 4 महीने 6 महीने साल कब तक ये हमें प्रॉब्लम रहेगी. अगर वो ऑलरेडी ले रहा है तो देखिए वो तो आप यू ऑल नो कि इट इज अकॉर्डिंग टू द डोज, अकॉर्डिंग टू द वेट. सो अगर उसकी 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट ले रहा है तो वो उसकी वही रहेगी. एक शॉर्टेज इतनी एक्सट्रीम हो गई थी HCQ की कि कुछ अथॉरिटीज ने कहना शुरू कर दिया था कि पेशेंट्स जो है ना अपनी रोज आधी कर लें ताकि और लोग भी इससे मुस्तफीज हो सकें. बट हमारा ख्याल है कि पेशेंट्स, हमारे पेशेंट्स बीमार बिल्कुल ना हो, उसको कम करके लूपस के पेशेंट्स और स्पेशली दे आर हैव एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज जिसमें HCQ इज सो इम्पोर्टेंट, लूपस के पेशेंट्स के लिए HCQ इज सो इम्पोर्टेंट. तो प्लीज आप उनकी वही डोज जारी रखेंगे, बल्कि अगर थोड़ी कम है तो ज्यादा कर दें. अगर मिल जाती है, गेट्स वालों ने तो कहा है पेशेंट्स को मिलती रहेगी एंड होपफुली दे विल कीप देयर प्रॉब्लम.